So good afternoon, dear learners. Good afternoon, sir. Welcome. So Thank you, sir. today is the last class of BEGLA-135, and I am sure you have enhanced your knowledge, particularly in this subject, during this last 5 days. But one problem was there. Definitely, I would like to tell before you. A very less interaction, student interaction is there. I think you are not going inside the matter. You are not going through the books or your study materials. So whatever it may be, at least we are happy that by this online class, you might have developed certain English knowledge within you. So as it is already time, I would request our Guneshwar sir to this platform and start his class. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we will start from Unit 2 of the last block. Book 4, Burning Issues. We left yesterday with a beautiful story by Premchand, the Thakur's Well, and that even is a burning issue. And now the second unit is again about that particular thing: make peace, not war. War is not necessary. And the thing is, herein you will be learning how to make a diary entry. I think you have some idea about what a diary is. Diary is the compilation of records of everyday events, of what important things that happens in a person's life. When he goes on to record it, it becomes a diary. And herein we will learn diary entry. The comprehension passage that you are going on to read is about that particular thing. This is the diary of a young girl, Anne Frank. Anne Frank was a German-born Jew. She was a victim of the Holocaust. During her period of her hiding from the Nazis, she wrote a diary which was later found and published. She died in February 1945 in one of the concentration camps, like the refugee camps. They were running away from the Nazis. The Nazis were, whenever they see a Jew, they kill them. So the camps, they have to run away from place to place, hiding, so that they may keep themselves free from the exploitation, from the death lager. Death was moving over their heads in any form. So at Belsen, during her time in hiding, she had kept a diary which she called Kitty. So she thought her diary to be her friend, and she shared everything, every thought that comes to her mind. She shared with the diary. She wrote the diary in that particular form as if she was talking to a friend. So she has given a name. Naturally, it is not done so, but Anne has given a name to his to her diary, and here is an excerpt taken from a chapter, a page from the diary of Anne Frank. Dear Kitty, Wednesday, 3rd May 1944. Dear Kitty, first just the news of the week. We are having a holiday from politics. There is nothing, absolutely nothing to report. I too am gradually beginning to believe that the invasion will come. As you can easily imagine, we often ask ourselves here despairingly, what is the use of the war? See, that is the burning question that has been asked in the unit as the unit started. Peace, not war. So, as you can easily imagine, we often ask ourselves here despairingly, what is the use of the war? Why can't people
live peacefully together. Why all this destruction, war brings destruction with it? So the question is very understandable, but no one has found it a satisfactory answer to it so far. Yeah, yes, why do they make still more gigantic planes, still heavier bombs, and at the same time prefabricated houses for reconstruction? Why should millions be spent daily on the war, and yet there is not a penny available for medical services, artists, and for poor people? It's a question unasked, and that has a relevance till today. Till today, the question of war is a burning question. People, those who are engaged in making wars with others, cannot give you a satisfactory answer. Why do they need the need war? And those who are the victims of it, they simply have to suffer. So why do some people have to starve? Starve means go without food. And while there are surpluses rotting in other parts of the world, oh, why are people so crazy? And calls the people who love war or who are there to go for war. She calls them crazy. See, I don't believe that the big man, the politician, and the capitalists alone are guilty of the war. Oh no, the little man is just as keen. Otherwise, the people of the world would have risen in revolt long ago. Means those who are there, those who declare war, they are the victims. But those who silently forbid it, they are also culprit. According to Anand says, we should those who do not want war, they should come in a group and they should protest that we don't want war. Why war is going to be all be worst? Everything that has been built of cultivated and grown will be destroyed and disfigured. After which mankind will have to begin all over again. Death brings war brings death, destruction, and decay. So I have often been downcast. I have often been sad, sorrowful, but never in despair. I regard our hiding as a dangerous adventure, but romantic and interesting at the same time. In my diary, I treat all the privations as amusing. I have made up my mind now to lead a different life from other girls, and later on, different from ordinary housewives. My start has been so very full of interest that that is the sole reason why I have to laugh at humorous sides of the most dangerous moments. I am young and I possess many varied qualities. I am young and strong and am living a great adventure. I am still in the midst of it and can't grumble. The whole day long, I have been given a lot, a happy nature, a great deal of cheerfulness and strength. Every day, I feel that I am developing inwardly, that the liberation is drawing nearer, and how beautiful nature is, how good the people are about me, how interesting this adventure is. Why then should I be in despair? Yours, Anne. As I told you, that Anne has taken her diary as her best friend, intimate friend, and she shares everything, every thought, every idea that comes to her mind in the concentration camp. Concentration camps are the camps where they actually were hiding themselves from the cruel Nazis. So the thing is, it is a page from the famous diary of Anne Frank, and towards the end of this particular thing, particular chapter, page number 24. Please go to the last part. You see, you have noticed that each diary entry has the following. Diary entry has the following points in it: a day, date, and year. Wednesday, 3rd May 1944 was the day and date, day, and year written in Anne Frank's diary. That is the style of writing a diary. You should mention the day on which you are writing the diary, the date, and then the year. If you were today, you are writing for today, you will have to go for, it is Tuesday, 30th June 2020. Now, it tells us about something that happened on that day,
gunfire in the hills, what can one see on the TV, what is played on the radio, whatever. If when you are writing a diary, it is about you, which experience you would like to say in details, which your experience you think it is memorable, you should note it down, you should record it for others to know one day. So you will go on as your importance basis. You can write uh, in paragraphs, in different paragraphs also. If you are making it, if you are telling about different things that has happened to you on that particular day, it expresses feelings like, I'm afraid of war, I'm sorry, I'm going to share with you a very happy moment of my life uh, today. So likewise, the diary expresses feelings, it expresses the thoughts of the writer, not bad but I must not show off. Likewise, means it will have the emotion, but it must have a objectivity in it. That means it should be exemplary for others. Those who are going on to gather some information, they will get fact and information. Simultaneously, they should know about the pattern. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଡାଏରୀଟା ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାର ତରିକା ହେଉଛି, ଯୋଉ ଡାଏରୀ ଆମେ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପେଜଟା ଲେଖିବା, ସେ ପେଜରେ ଯୋଉ ଦିନର ଡାଏରୀ, ସେ ଦିନ, ସେ ତାରିଖ, ସେ ମସିହା ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଡାଏରୀରେ ଯୋଉ ଇମୋସନ୍ସ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଦିନର ଘଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଡେଟା ଖତମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଡାଏରୀଟି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟରେ, ଯେମିତି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଏକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଏକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଏଠି, ଡିୟର କିଟି, she has got it describes her dear diary as her intimate friend, so she says dear kitty. You may not write it as dear kitty, you may give another name to your diary page. Then she goes on to describe two or three emotions of his. First, just the news of the week, we are having a holiday from politics. Likewise, then goes on to the question, a burning question that eats her up is, why people go for waging wars against others, when the rest part of the world there is deprivation, there is illiteracy, there is poverty, there is suffering, there is starvation. Again, a very vital point, vital question that Anne asks. So likewise, when you go for writing your diaries, or a question comes for diary entry, so what you have to describe, it is written. The question may be, write about an unforgettable day in your life, write about a day when everything went wrong with you. So you will particularly mention one day, and where from starting from your getting off and up to going to bed, a daily routine, जो daily routine ଆମେ ଲେଖିବା, ସେଥିରେ everything went wrong with you, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଦିନ ତମ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଗଲତ ହେଇଥିଲା, ମାନେ you never got appreciation, you did hard work but you never got appreciation, you never got your labor never bore fruit, nothing of that sort happened in that day, the most unforgettable day, the one dream you may share, your aim you may share in your diary pages. So this is what we have to tell you about diary entry. Another example is given. This is the pattern you see. This in this way you will get your exams also. That a passage will be there, and following the passage there will be 5 short questions, 5 to 6 short questions will be there in of comprehension type, and then some grammatical question will follow on that particular passage. What is there in your book is vocabulary. Vocabulary, as I told you, that vocabulary is the knowledge of new words that you come across in the passage. जो पैसेज तुम पढ़ रहे हो, उसी पैसेज में जो नया वर्ड यूज होता है, वो नया वर्ड का नॉलेज, the knowledge of new words, how you can use them in different way, are known as vocabulary. Vocabulary, in a single word, we can tell that it is the knowledge of new words. So here are some words, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस एंड नेगेटिव एक्सप्रेशंस, दो टेबल में आप लोगों को करना है। ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स है, आई कैन पॉइंट आउट इफ यू आर देयर विथ मी विथ द बुक्स, पेज नंबर 22, heading 2.3 vocabulary, and you see the table is there, positive expressions and negative expressions, words used
in a positive meaning and words used in a negative meaning. You see, I'm calling out the negative things. The answer I'm going revolt, raise, destroyed, disfigures, grumble, dangerous, despair, downcast, war, murder, and kill are negative expressions used in the passage by in the diary by Anne Frank. And other words which are positive in nature are beautiful, nature, great adventure, cheerfulness, strength, peacefully, interesting, laugh, happy nature, developing inwardly, etc. So these are the words that are used which brings out some positive qualities. They are called positive words or positive expressions. Which bring out negative qualities are called negative expressions. Now another type of vocabulary exercise you will find words or phrases in the passage that we read. ଏବେ जो पैसेज हमें पढ़ले से पैसेज रे जो सिनोनिम्स का वर्ड ए मीनिंग जोड़ा मीनिंग दिया है ता पई जो वर्ड यूज ही पैसेज रे सेगुडा हमको खोजबार अछि एक्सेस माने कोन अधिकार सो एंड द वर्ड कम्स सरप्लस parts of a building ready to be fitted together prefabrication like word exactly prefabricated and complain, grumble, suffer from hunger, बिना खाइबा जो अनाहार जा कहबा हंगर है क्षुधा तो सफर फ्रॉम हंगर क्षुधार ताड़ना सहबा सिंगल वर्ड रे इंग्लिश में कहि परबो ताको स्टार्व STARVE सफर फ्रॉम हंगर ये जो वर्ड माने कहू जनरली सरप्लस prefabricated then grumble starve revolt these are the words that has been used in the comprehension passage that we just read the diary of Anne Frank. Then exactly the grammar. This grammar is separate from the grammar from the passage. These are the grammatical concepts. The grammar book, textual grammar. जब तुम स्कूल मन कर थिला उटे grammar बही. So से grammar बही रो concept रे जमे adjectives पढ़िबा. Adjectives are the describing words that we use for nouns. Adjectives कहले ओडिया रे हमें विशेषण पद कहूछु. विशेष्य पदर विशेष गुण बा क्वालिटी को बुझौतवा पदटी हला adjective बा विशेषण पद विशेष्य पद संबंध रे तार गुण कार्य अवस्था संख्या परिमाण इत्यादि को बुझी थाए तो इतरे दिटा जिंस अछि एज यू आर एवर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स ई मॉडिफाई वर्ड रो अर्थ हला अधिका करी कहबा सूचित करबा देखि दबा टू स्पीक मोर. So, but no one has found a satisfactory answer so far. Answer, what type of answer? Satisfactory answer. Answer is the noun word. Answer से पहले जो word use हुआ है satisfactory. तो satisfactory describes the type of answer that you have to give. So, satisfactory becomes the adjective. It comes before the noun answer. Satisfactory answer. Second definition. Though adjectives generally appear before the nouns in sentences, they also can occur after verbs such as is, was, seem, look. इबळे जो वर्ड्स अछि जाको स्टेटिव वर्ब्स कहउछु जो वर्ब्स मान करे साधारणतः हमें आईएनजी फॉर्म लगै परिबा नाही तो स्टेटिव वर्ब्स परे बेले बेले हमें कोन करे सेंटेंस रे एडजेक्टिव्स लगै कि सेंटेंस को कंप्लीट करू दउ सेठी सेंटेंस रो स्ट्रक्चर कोन हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट ई जो कॉम्प्लीमेंट हुए सेटा उडा नाउन फ्रेज हे परिबो बा उडा एडजेक्टिव हे परिबो जेमति सी लुक्स स्मार्ट she appears beautiful she is nice she became nervous so nervous nice beautiful smart these are qualities of the pronoun she or if I can say name Anne was adventurous so Anne was adventurous Anne is the name of the girl and adventure is a rather quality so she is adventurous. Adventurous is the adjective word. It describes certain quality of the subject and so this is that is what we call an adjective. Third, adjectives can themselves be further modified by other adverbs and adjectives. For example, the humorous side of the most dangerous. You see most and dangerous movements.
two of the adjective words that can come also. So when adjectives are very often adjectives और कोई adverb या और कोई adjective को भी describe कर सकता है. A common way of indicating noun or more or less of a quality suggested by the adjectives is using by comparative and superlative forms of adjectives. ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆମେ ଦିନେ ଆଗରୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲୁ adjectives ବାବଦରେ. adjectives ର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋଟେ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ. ପଜିଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ as usual, rose is beautiful. If you can see, lotus is more beautiful than rose. And another, if you can say, the sunflower is the beautiful, most beautiful flower. Now herein one example is given, that rose is beautiful. It's the beautiful word is the positive degree. Gulab ta gote sundar phula. तो ता पाखरे आमे कोन करछु, when we compare between two आमे कहछु जो lotus पद्म फुलटी गोलाप ठो टिके सुंदर. So there is a comparison drawn between two, rose and the lotus. So lotus is more beautiful than rose, and sunflower is the most beautiful. So before a superlative degree, we use definite article the most, the nicest, the biggest, the latest, the grandest, the greatest. So before superlative degrees of adjectives, we use definite article the, and when we go for a comparison between two of the things, two of the nouns, so we use then, THAN, adverb THAN. I speak better than I write. Herein a comparison is made between my writing skill and my speaking skill. I speak better than I write means I write well, but whenever I speak more better, more well than your speaking. So it is said that I speak better than I write. Means my writing is good or my writing is well, but I write better. I speak better than I write. ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ଲେଖେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କହେ, ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ମିଠା, sweet, sweeter, sweetest, nice, nicer, nicest, big, bigger, biggest. So bigger is the comparative degree when we compare two nouns or two qualities of the nouns. Between two nouns, same quality it may, but suppose we can say rasgullas taste sweet, and or rasgullas are the sweetest. So agar rasgullas are the sweetest means you have to go for less comparison, less sweet things than rasgulla to be the superlative degrees. But if you say sugar tastes sweet, honey is more sweeter, and if you like rasgullas, then I can say rasgullas are the sweetest for you. So when we derive a comparison between more than two nouns, we use the superlative degree of adjectives, and before that the definite article the is used. So when we pronounce, when the comes, the pore jodi ame gote vowel letter re start korichu noun te tale se the boli padhiba the ko, the pore jodi gote consonant letter ru noun te start heichi, the biggest thing, the b sound is a consonant sound, so there will you should not say the, rather you should say the or the biggest thing or the biggest thing in the world is. But when you say the earliest, the earlier we start, the earlier we reach. The earlier, e is a vowel sound or vowel letter, the word just after the to be pronounced as the, jam कहक चाहूची ताहला जदि the को हमें the परे जदि गोटे vowel letter रू से word टा start heichi जो word use हबो सेठी हमें the को the भलिया पढ़िबा, आ जदि सेटा consonant रे start heichi ताहले the को the किंबा da बोली पढ़िबा. Then another diary entry is there. Dear, maybe I'm trying to concentrate so I can do my homework reading, but I simply can't. Something is going on in town. You can hear gunfire from the hills. On the TV, I see people in front of the Parliament building. The radio keeps playing the same song. And that's all very nice, but my stomach is still in knots and I cannot concentrate on my homework anymore. Maybe I'm afraid of war.
So a very small piece of diary entry, but to give you one idea that how diaries are kept. It is again the date, the day, Wednesday, October 21, 1992. Dear Mimi, today is Daddy's birthday. I gave him a kiss and and a happy birthday card. And now let me explain something to you, Mimi. As you know, I confide in you every day, almost every day. Almost is written bracket. So almost every day. The other day, Maja asks me, "Do you keep a diary?" Pippa, my nickname. I say yes, and Maja says, "Is it full of your own secrets or is it about war?" And I say, "No, it is about war." So, and she says, Pippa, you are terrific. She said, because they want to publish a child's diary and it just might be mine, which means you, Mimi. So I copied part of you into another notebook and you, Mimi, went to the city assembly to be looked at. And I have just heard, Mimi, that you are going to be published. You are coming out for the UNICEF week. Super, you see, SUPER is, she feels the writer who writes the diary, she is feeling excited about that her diary is going to be published. Soon the rest of the world, a great many people will come to know about a child's feeling on war. So it gives her rather a very excited feeling. So this is how diaries are written, and you may get a question about writing a diary. So this is the thing you should keep in mind, that when you are you are writing a diary, the number of emotions that you are to put in, you have to put that in different paragraphs. But before that, the format is that you should write the day, date, and the year of writing. You may write the mention the time also, and then you may call it, you may address it as dear diary or dear kitty by giving a nickname to your diary. You can write that, or else you directly start with your experiences of the day. And remember that the subject matter, as it differs, you will go for one subject matter, one paragraph, one idea or one thought, one paragraph, one dream, one paragraph. So you can have one or two, three paragraphs according to your need. You can write that. Now here is a very beautiful song. The details of the song is given at the back at page number 28, and it is by John Lennon. And you have to fill in the blanks type of exercise is given in page number 25, which we can go for. The total poem, the whole total poem as it is given it at page number 28. So with this we come to close to our second unit. It's about peace, not war. And let us start with the third unit, young leaders. It is about leadership qualities. It will, some leaders are born leaders, some acquire leadership qualities, but the leaders, those who are great leaders, so people almost everywhere follow him automatically. And we are proud to have such a big leader with us. And he was none other than Mohandas Karamchand Gandhi. He was the greatest ever personality of the last millennium, and he shook the mighty British Empire with the weapon, the strangest ever weapon. They say it is non-violence, truth and non-violence. So he has given the name of his autobiography, My Experiments with Truth, Satyaro Prayoga. So with non-violence and peace, he set the foundations of British Empire in India. But it did not start all of a sudden. So here is an excerpt, an extract rather, from My Experiments, from his own autobiography. This passage has been given, how it came, how the fighting for Indian independence came to his mind, how he has been humiliated in the soils of South Africa, Pretoria,
So on the way to Pretoria, the heading is on the way to Pretoria. Pretoria is the capital city of. So see, it is an extract as taken all of a sudden. The train reached Matisburg, the capital of Natal, at about 9 p.m. Beddings used to be provided at this station. A railway servant came and asked me if I used to be provided. Sorry, if I wanted one. No, said I have one with me. He went away, but a passenger came next, looked me up and down. He saw that I was a colored man. You see, the British people wear white ones, and to other colors means like us Indians and others, they call them the black or the colored man. So, seeing me a colored man, this disturbed him. Out he went and came in again with one or two officials, and the officials, they all kept quiet when another official came to me and said, come along, you must go to the van compartment. It's not the van compartment, general compartment. But I have a first class ticket, said I. Gandhi said, Gandhi protested there that, but I have booked a first class compartment ticket. I have to go there. That doesn't matter. Rejoined the other. I tell you, you must go to the van compartment, general compartment. I tell you, I was permitted to travel in this compartment at Durban, and I insist on going on it. No, you won't, said the official. You must leave this compartment or else I shall have to call a police constable to push you out. Yes, you may. I refuse to get out voluntarily. And he was so strong, adamant about his ideas that as he possessed the tickets, so he would not go voluntarily out of that compartment. The constable came, he took me by the hand and pushed me out. You have a photo over there. There you can see the police, the man inside the railway coach is having a police uniform. He throws Gandhi out. The man is flat on the platform, is none other than our father of our nation, Mahatma Gandhi. So that very night, Gandhi decided, come to the next paragraph. It was winter, and winter in the higher regions of South Africa is severely cold. Matisburg being at high altitude, the cold was extremely bitter. My overcoat was in my luggage, but I did not dare to ask for it, lest I should be insulted again. So I sat and shivered. Then there was no light in the room. A passenger came in at about midnight and possibly wanted to talk to me, but I was in no mood to talk. I began to think of my duty. There, it is most important. So I began to think of my duty. Should I fight for my rights and go back to India, or should I go on to Pretoria without minding the insults and return to India after finishing the case? It would be cowardice to run back to India without fulfilling my obligation. The hardship to which I was subjected was superficial, only a symptom of the deep disease of color prejudice. I should try, if possible, to root out the disease and suffer hardship in the process. Redress for wrongs, I should seek only the extent to that would be necessary for the removal of color prejudice. So I decided to take the next available train to Pretoria. The following morning, I sent a long telegram to the general manager of the railway and also informed Abdullah Seth, who immediately met the general manager. The manager justified the conduct of the railway authorities, but informed him that he had already instructed the station master to see that I reached my destination safely. Abdullah said, wired to the Indian merchants in Matisburg and to the friends of other places to meet me and look after me. The merchants came to see me at the station and tried to comfort me by narrating their own hardships and explaining that what had happened to me was nothing unusual. They also said that Indians traveling first or second class had to expect trouble from railway officials and white passengers. The day was thus spent in listening to these tales of woe, and the evening train arrived. There was a reserved berth for me. I now purchased
at Martinsburg, the wedding ticket I had refused to book at Durban. The train took me to Charlestown, and there Gandhi decided that he should fight for that injustice, that insult, and then the rest is history. He became, or rather, an epitome, an icon of freedom struggle in India, and he also gave their civil rights, that you can say the people of the colored prejudice that he sees, the color discrimination in South Africa get momentum from that day when Gandhi decided to fight against this injustice, which finally ended up with India winning its freedom from the hands of the British. So you see, yeah, it is about one of the bitter experience Gandhi had. Some sort of bitter words are there in your vocabulary. You will come across some words where we use bitter, bitter truth, bitter reality. So page number 34, and Martinsburg being at high altitude, the cold was bitter. In the above sentence, number 2 and page number 34, see bitter words. That means in the above sentence, cold has been called bitter. Bitter means piercing. The adjective bitter can be used for some other expressions to match the following expressions with the right choices from the box given below. Bitter gourd. Bitter gourd is a vegetable, green vegetable with quinine like taste. Karela जहाँ हम कहूँ कलरा जोटा आम ये अच्छी कलरा खाइबा को पिता लगे तो तार इंग्लिश है बिटर गोड देन बिटर एक्सपीरियंस में हम सिंगल वर्ड करि परिबा अनप्लीजेंट बिटर पिल टू स्वालो रिमोर्सफुल मींस थॉटफुल होबा टिके चिंतित ही पड़िबा हजम करिबारे सक्षम न होबा अर्थात अपमान को सहन करि न परिबा दुखी हिजबा. These are the meanings we can use. Then to the bitter end, you can say to do everything possible. It's a phrase which means to do everything, means beat A in the box. Below the bitter words, there is a box, and you have to use the meanings over there. Bitter gourd has got the meaning with C. Number bit C, green vegetable with quinine-like taste. Bitter experience, E, unpleasant. Bitter pill to swallow, that means remorseful, or B. To the bitter end means to do everything possible. Then bitter tears. It has got concepts like it's very difficult to accept bitter enemy, a feeling of hatred for someone, bitter wind, extremely cold and biting wind, bitter disappointment, a deep feeling of anger and unhappiness for not succeeding. So Gandhi was traveling again by vocabulary. Some new words that you are going on to come across in the pages. Number 3, Gandhi was traveling by train. In other words, he was going on a journey. There are some words for journey. You see, who is a journey by ship. You have to match it. The journey words in column A and their meanings in column B. So cruise stands for a journey by a journey in a ship. Then excursion should be journey when you visit several places that interests you. Then expedition stands for an organized journey usually involving several people that is made for a particular purpose. So just as exploration, आम जमती गोटे निर्दिष्ट पर्पस रे दळे हेकरी जिबा इतिहास रो खुदन गुडाक जनरली जो ऐतिहासिक सोर्स अछि जोठी जाय कि माटी खोली कि माटी तळु पुराना जुगर घटना बा चिन्ह मान को बाहर करा होची सेगुडा होची एक्सप्लोरेशन गोटे नुवा एरिया जो जा विषय रे आगु किछि जणा जाय नै ताकू निजे जिबा एक्सप्लोर करबा एवं से विषय रे अन्य मान को जणाइबा होची एक्सपेडिशन. टूर the pronunciation TOUR, tour
it means a trip to a place of interest, for example, the cinema or the beach. Then trek, obviously trekking stands for a long walk in the countryside that you go for pleasure, trekking. Then outing, outing is also a journey word. So the meaning is a short journey, usually a holiday. Then hike, hike stands for your trip to a place of interest. Then a long and difficult journey is your safari. So, and again, come for the grammar section. Here, only two of the things that we are going on to say, see from the direct and indirect speech. It starts with the question words. So when it is the statement spoken by the speaker is in direct speech, we have to change it into indirect speech. So a railway servant came and asked me. Me means asked Gandhiji, do you want one? The words within inverted comma is the words spoken by the railway servant, and he spoke to Gandhiji. So sentence A is in indirect speech, A is in indirect speech, and sentence B is in direct speech. A railway servant came and asked me if I wanted one is the indirect speech. For the direct speech in B, a railway servant came and asked me, and after that the comma is there, and the whole speech of the railway servant is put within two inverted commas. Do you want one? So the sentence starts with an auxiliary verb do. So when this type of sentences are changed into indirect speech, we have to use if or whether. So the details of the rules are given. So sentence A is in indirect speech and sentence B is in direct speech. The sentence within inverted comma is an interrogative sentence. This interrogative sentence belongs to the yes no category, and when such a yes or no type of question is changed from direct to indirect speech, if or whether is added to a as a connector. The tense of the interrogative sentence is in the present, whereas in the indirect speech it is in the past tense. So directly, when we go on to change it, we will learn the first. See at page number 37. The passenger said, "Will you leave the compartment immediately?" The passenger said, "Will you leave the compartment immediately?" Herein, see the structure. The passenger said. He said hochi reporting verb. तापर गोटे कमा अच्छी कमा पर जो स्पीच टी दिए जो स्टेटमेंट दिए सेटा से पैसेंजर रो कथा एवं सेटा दुटा इन्वर्टेड कमा भितर लिखा है विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली ये जो सेंटेंस हला एटा गोटे क्वेश्चन सेंटेंस ए क्वेश्चन रो आंसर हबो यस आई विल और नो आई विल नॉट तणु ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें यस नो क्वेश्चन कहबा जोटा सहायकारी क्रिया मान को सहायता रे आरंभ होइता है सहायकारी क्रिया प्रथमे इज पुट इन द at the front. So is the when we change it into indirect speech, the answer I am going on to speak now. So said जगह said के बदले asked, you use asked, it is quite easy. So the passenger asked, will जगह हमें तक statement करिबा तो if he leave the will थिला will टा past को पळेबो will टा would हे जैछि तो if he would leave the compartment immediately. Could you get it? बुझिलो कि the passenger said, will you leave the compartment immediately? एटा इन्वर्टेड कमा रे अछि will रे स्टार्ट हेछि yes no क्वेश्चन हेतिबारु said जगह रे said जो रिपोर्टिंग वर्ब बेला said जगह रे asked लागिबो. So the passenger asked if किबा whether गोटा में जोड़ीबा एठे में either if लगै परिबा बा whether लगै परिबा तापर स्टेटमेंट टा क्वेश्चन टा जोटा अछि सेटा साधारण वाक्य रे परिणत हेइ जिवो एवं जो प्रेजेंट टेंस सेतरे व्यवहार हेतिबो से प्रेजेंट टेंस टा पास्ट टेंस को पळेबो. These are the rules. So the passenger asked if he would leave the compartment immediately. Gandhi said, haven't I the right to travel first class? Gandhi asked if he had not the right to travel first class. The constable said,
Don't you understand simple instructions? So the constable asked if he did not understand simple instructions. Likewise, you have to change the other things over there, and if there lies any doubt, the answer is given at the end. So should not be worried about. The thing is, it is written. The rules are there, and let me complete my discussion. And at the time of your question answer, we can have a long discussion over there all about those things, the direct and indirect speech. Another type of direct and indirect speech is given in page number 38 also. Herein, all the sentences, 7 to 8 sentences are there, 8 sentences, those are written in indirect speech. You have to write the direct speech. In part 1, the official said, shall I call the police? This sentence was in direct speech, you have to make it indirect. In number 2, the sentences are given in indirect speech, you have to make it direct. And with this, let us come to the next chapter. The next chapter is doing away with exams. It is for your worriedness that exams, what should be the exams, how we should take it, how we should prepare for our exams, because herein a letter is being written from a son, rather a teenage son, like most of you may be there, and the son writes to his father. It's a very long letter, but it is about exams and type of exams here the boy is taking, and what is his experience and how his father deals with him after getting the report card. So, dear Papa, this is in answer to your letter about my transgression, deterioration in marks. Yes, my first rank slipped to the second. तमने से आगु फर्स्ट होतला एबे सेकंड ही जाईची ता बापा तको टिके चिंता करूछन ताको को एडवाइस करूछन यू एडवाइस दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स. So that is the answer. Yes, the operating work think did make me reflect, and these are the results of those reflections. ये जो चिट्ठी से चिंता कला परे आपन का एडवाइस अनुसार चिंता कला परे बापा मो ई सब कथा भाबिली एवं मो भाबुची जे मोर चिंता रो जो आपन कथा अनुसार चिंता करबा परे मोर भितरे जो भावनाटी आसी से आपन तो बुझिया पय चेष्टा करिवे. फादर, we have never really been close. You see, father and son ko bhitre gote closeness nahi se kuch, we have never really been close, and I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. Yet I would like you to be aware of my thoughts. They are very important to me. You are highly educated and you provide very well for the family. But in your departmental store, do you apply Pythagoras theorem or Newton's law of gravity? For that matter, does your doctor friend or your lawyer brother? Papa, my grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood, of days spent in plucking mangoes and guavas from their orchards, of picnics on the banks of the river where the men cooked mouth-watering food, or playing marbles and gilli danda. From his talk, it seems studies were an ancillary subject, secondary thing, and living and experiencing the major subject. Father, is he feeling, or is it possible that the world has turned topsy-turvy in just about 70 years? Papa, my grandmother is semi-literate, yet she is at peace with her pots and pans, her flowers and garden, her Bhagavad Gita and scriptures. My mother, highly qualified, is highly strong, tense, and nervous. Do you think literacy makes us restless, afraid, and frustrated? Oh, Papa, last week my rose plant almost died. Some pests. I asked my biology teacher what I should do to save it, and she was cross. She said, go ask the guy who keeps
gardening things, he will tell you. We learn about pesticides, but we do not know how to use them. Oh Father, it matters not to me why the apple doesn't fall upward, nor do I care what Archimedes did. What matters to me is that my rose plants remain healthy. When there is a fuse in my house, I should know how to do something about it. I should know how to make a desk for myself with my carpenter's tool. Instead, I learn about uh, hypotenuse, rational square roots, etc. Papa, once I asked my grandmother how she got to be so wise. Do you know what she said? By living and experiencing. And she laughed as though I had asked something which was so obvious. Are we living, Papa? Or is life bypassing us? What I fear is that if I were to meet Newton face to face, I would fail to recognize him. So busy am I learning about him, just like that boy Vinu in that award winning film, he prattles on the hibiscus is red, and 100 times, but in his book, he colors it yellow. Are we missing out on the essence of life? Anyway, Papa, do you know where I lost that watermark that brought about my fall? It was a fill in the blanks. I held that I was invited to tea, and my teacher was adamant that he was invited for tea. So, a matter of grammar and Papa, if he says George Bush is the president of India, it will have to be so. If he says the sun rises in the west, so be it. And if he says the earth is flat, it will be my papa. At least on my answer papers. My first rank is at stake. You see, still my dearest papa, I shall keep your advice in mind and try not to lose any quarter marks. As always, your ever obedient son, Rahul. Postscript PS. Postscript. Your eyes will not see this anguished plea, my father. This was only to lighten my burdened heart. It is not all arteries and muscle. It feels too. From the sources from the Hindu, it's a letter. It's a informal letter, friendly letter, or social letter written from a son to his father. So let me start with the forms. The form is there, dear Papa. So the subject जहाँ को मैं चिट्ठीटा लिखुचे ताकू संबोधन करके डियर पापा देन लास्ट रे लेफ्ट साइड रे एज ऑलवेज योर एवर ओबीडिएंट सन त तळे गोटे पीएस लिखाइछि पीएस हला पोस्ट स्क्रिप्ट रो अर्थ हला जदि गोटे चिट्ठी लिखले बेलकु कोनोसी गोटे इंपोर्टेंट कथा मिस हे गला ताकू हमें से जो योर एवर ओबीडिएंट सन राहुल सिग्नेचर एवं लिखि सरला परे तळे लिखि दे परबा पीएस करिकरी এবং পিএস পরে আউ কিছু লিখবা কথা নো পিএস হলা পোস্ট স্ক্রিপ্ট চিঠিটা সেইটি সরিছি রহি যাইতলা ইম্পর্টেন্ট কথাটি সে লিখিବାକୁ চাইছি जो কথাটি সে লিখিବାକୁ চাইছি পোস্ট স্ক্রিপ্ট রে সেটা হলা যে সে দুঃখী ଅଛି जो गोटे मार्क कटिगला ता बापा ताको एडवाइस करिक गोटे चिठी लिखि दिले से मार्कटा कटिला जो लास्ट पैराग्राफ तक आसबा लास्ट रो दुईटा पैराग्राफ गोटे पैराग्राफ ऊपर अछि गोटे क्वार्टर मार्क तार कमिला सेति पई तार फर्स्ट रैंक ता सेकंड हे जेछि से पिला and that is about a grammar exercise se pila khatare likhichi je invited days t so preposition exercise is invited to haba tar teacher kuchen invited for haba katha तो invited for haba pai se write करले এবং से अनुसार तार जो मार्क कटिला जो क्वार्टर मार्क कटिला सेति पई से कहले ता बापा ता गोटे लंबा चिट्ठी लिखले से पिला टिके आंसर दवा पूर्व भाबी के लिखिबो बेटा कहले এবং से पिला से भाबिया पई कोन असुविधा रे पड़ला से तो से लिखुची जोटा वर्तमान समय रे आमे कोन करूछु आमे पढुछु से पिला बडा से जो पिलार कथा कहूची बिनु बोले गोटे अवार्ड विनिंग फिल्म रे गोटे सेंट्रल कैरेक्टर अछि जो पिला रेटिल अर्थात घोसी चलुची 100 थर घोसी करी मने रखुची हिबिस्कस कहले मंदार फूल हिबिस्कस इज रेड मंदार फूलटी लाल रंगर मंदार फूल लाल विदाउट बीइंग एबल टू सी इट फॉर हिमसेल्फ जे मंदार फूल कोन से बहिरे पढिची लाइन टे फोटो नाही से बहिरे जोटी से पढुची सेतरे नाही से खाली मन रखुची जे हिबिस्कस इज रेड तो
तो हिबिस्कस मंदार फूल से कथा से जानूनी को फूलटा रेड से कथा जानूनी से खाली जानूची हिबिस्कस इज रेड तो फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज असली व्हिच फ्लावर इज रेड ऑप्शन अछि ऑप्शन टा हिबिस्कस अछि यदि लिखि देला सीधा हिबिस्कस बा यदि हिबिस्कस इज डेस रेड येलो जंती आसिले सेमती लिखि दबो से रेड एमती हमें खुशी खुशी के जाउछु से पिला से कुछ कि जतल तार कलरिंग बुक अछि सो से कलरिंग बुक रे सो कलरिंग बुक रे से कोन करूची तो से कलरिंग बुक रे से येलो कलर कर दूछ तक बिकॉज़ ही डजंट सी इट माने से सतरे से जो बिनु बोले जो पिला से देखि नै मंदार फूल बस इतो जो बहीटी पढुची से बहीर जो प्रैक्टिकल दिग अर्थात से बही साइड रे चित्रटे दिया जायने अधिकांश समय रे आमे भी से करूछु आमे बहीटे को पूरा मुखस्त कर दोछु सिलेक्शन क्वेश्चन पढी के पढुछु किछि सिलेक्शन क्वेश्चन जदी बाजिला ताले 100 रु 100 जदी सिलेक्शन क्वेश्चन बाजिला नै ताले आमे बसी से क्लासरूम रो फैन को देखिले बुली बुला के किछि समय गला जतोळ प्रथम छाडी को कहबे हम छाडी दिले पळे आसले जा हला बाहरला पर केते रहला जेति की देबे मर्सी मार्के केते मार्क स्कोर करि परिबो कि जाने केते मिलिबो टीचर जेति की देबे सो द insult is towards shifting of responsibilities towards the teacher इंग्लिश से गेला आउटिक असुविधा इंग्लिश रे हमें स्पेलिंग मिस्टेक करूछु ग्रामेटिकल मिस्टेक करूछु वी आर नॉट लीस्ट सॉरी अबाउट दैट हमें से बाबद रे ओरिएट रे हमें गोटे भाव कथा पूरा मुखस्त कर रखिछु इंग्लिश गोटे लिटरेचर सब्जेक्ट सार माने मार्क दियंती नाही 100 रु केते मार्क पाइ परबो 90 95 नोबडी विल से काहिर कथा सेटा हबो नै 90 95 के इंग्लिश रे रखि परबे नै कहले हम इंग्लिश से तो भलो लिखु न से पिला जंती कोछि जे जदी से टीचर चाहू जंती से बळे सब जगह हुए नै तो से पिला गोटे भलो एग्जांपल देछि चिठीटे मते लागिलानी तमन सब बुझिलो मु आउथरे चिठीटा कहि दोछि तुम से कोन कहिला तो ग्रैंडफादर को टाइम रे पाठ पढाटा गोटे एंसिलरी सब्जेक्ट थिला अर्थात सेकेंडरी सब्जेक्ट थिला दे लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द लाइफ से माने पंचीकृता से आइमा को भी से पचेछि तार जो ग्रैंडमदर से कोछि से केमती वाइज हेछि बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग अभिज्ञता ही श्रेष्ठ शिक्षक आमे कोन करूचे आमे किछि डाटा किछि इंफॉर्मेशन को पूरा से मुखस्त करी करी चालुछु एवं जदी सेही इंफॉर्मेशन आस करागला आसिला परीक्षा रे आमे केवल ताको सेति के लिखि दोछु एवं आमे भाबुछु हे गेला माने सेति जदी सेटा न पडिला ताले आमे आ ओलया कथाटी किछि करि परनो से पिला एक्जेक्टली से कहै को चाहूची गोटे एग्जांपल से देछि तार बायोलॉजी टीचर मु से पचरला मोर बगीचा रे गोटे गोलाप गछटे मरि जाउची किछि पोको सेथरे लागि जाउचंदी कोन करबी तो ता बायोलॉजी टीचर ताको कहिले से जा बाजार जो गार्डनिंग सामान जे सब रखुची बगीचा जिंस जे बिकुची चारा से सारो इत्यादि जे बिकुची ताको पचरले से कहि दे परबो से पिला से कथा आपन से प्रश्नटी से पचरची जे जदी हमें पढिले जो विषय रे 100 मार्क रो क्वेश्चन पेस्टिसाइड गोटे सेपरेट चैप्टर अछि हमरो कीटनाशक रोगन ये पोकमरा औषध विषय रे पढिले ताको मन रखिले क्वेश्चन आंसर सिखिले एवं परीक्षा रे लिखुछु कि निजर जेतोला बगीचा रे गोटे गछरी पोक लागि जाउची हम जानू पोकमरा को पोकमरा औषध आनबा केते मात्रे पकेबा अर्थात प्रैक्टिकल वैल्यू एप्लीकेबिलिटी वैल्यूटी नाही हमें आज पढिले गोटे कांसेप्ट तापर हमें भूली जाउछु से जिनसटी कोन केमती हैला बा सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन जो कथाटी से कहबो चाहि जे जो रिफ्लेक्शन पाई जो थिंक प्रोसेस टा रिफ्लेक्शन रे सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन हमन नाही रिफ्लेक्शन कहले एक्जेक्टली से पिला जा कहबो चाहूची त बापन को जे हमें जहा पढिले बा जहा सुनिले हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सुनुचु मझी रे टिके ओडिया कहदेले भल लागछ इंग्लिश क्लास रे जदी सर जन को टिके ओडिया धाडे ओके कहि दी पर जदी हमें लागछ ठीक द टीचर इज वेरी फ्रेंडली सो व्हाट वी लर्न ओडिया वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश हमको इंग्लिश क्लास हमको इंग्लिश रे सब कथा करबार अछि इंग्लिश रे लिखिबार अछि ई चिठीटा हम तुमको ओडिया रे पढि के सुनाई देबी किंतु परीक्षा रे लिखले बेले तो ओडिया रे लिखियो नै ना चिठीटा इंग्लिश रे लिखियो पड़िबो हमको इंग्लिश रे बुझिबो पड़िबो ओके टिके कष्ट होई पारे बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स इन इंग्लिश दैट इज व्हाट वी कॉल प्रैक्टिकलिटी सेटा होची प्रैक्टिकल कांसेप्ट सेमती जदी नो करबा ताहले कोन हबो ना हम क्रेमिंग द फैक्ट्स हमें मुखस्त करबा घोषि करी मन रखबा जदी सेटा पढिला ताले भलो कथा नले पडला नै ई कांसेप्ट रे तुम गोटे छोट गप होय तो तुम कोठी कोठी पढि दिबा आगु कहि दी परबी गोटे जर्मन रे जने राजा थिले से प्रति सप्ताह रे तांकर सेना बाहिनी को बुलिबा को आस्तले आ जो सैन्य माने नुवा जॉइन करूथिले तांको से तीनोटी प्रश्न पचरथिले से तीनोटी प्रश्न रो क्रम विषय थिला तमे केते दिन हला एठी चाकरी करूछो केते टंका दरमा पाउछो एंड तमे सैटिस्फाइड अछो कि नै ई क्रम भी एपट सेपट हो नथला
थरे कौन हला जर्मन जानि नथिबा गोटे सैनिक के जोग देले आ सेनापति ताकू मुखस्त करी सिखै देले जे लास्ट वीक गोटे वीक गला पर राजा आसीबे जेतले इंस्पेक्ट करिवे से सब बेले 8 टर्म रे पचारंती तमे या पचले तमे मुखस्त करो खाली से मुखस्त करला जेतु से निजे जर्मन जानु नथला तो से मुखस्त कर रखिला जे मु 3 सप्ताह हला चाकरी करूची 21 जर्मन मुद्रा मते मिली सरची वर्तमान पर्यंत एंड आई एम सैटिस्फाइड राजा कौन कले से बुली बुली गले देखली कौन मन को आसिला राजा क्रमटी बदले गले प्रश्नटी पचारले तमरो दरमा केते से कहला 3 सप्ताह तुम केते दिन हला चाकरी करूचो 21 जर्मन मुद्रा मु पाई सरची सो ऑब्वियसली यू कैन सी द थिंग्स जहा हेइतिबो ता परे राजा बुझी पकेले एवं जो आ भीतर जो ब्लैक मार्केटिंग हेइतला अर्थात सेनापति जो मात्रा रे फेवर देखि से लोकटी को रखिथिले सब धरा पड़ले राजा तापर जा हेइतिबो से अलगा कथा आमर अधिकांश समय पाठ पढ़ाटी आम से भाया कर मुखस्त कर से भाया जदि परीक्षा से क्वेश्चन टी आसला ताले भल कथा नहले ना योर स्कूल पढ़ले आम से लिखि परुचु जदि प्लेस वेयर यू गो टू स्टडी रियल सब्जेक्ट रे गोटे पिला थरे लिखिदेला आई द प्लेस वेयर आई स्टडी इज माय स्टडी रूम तापर से स्टडी रूम रो डिस्क्रिप्शन दे दल बस ऐसे अच्छी टॉपिक है योर स्कूल बा योर कॉलेज लिखिबार थिला से द प्लेस वेयर यू गो टू स्टडी से बुझिला त स्टडी रूम रे से स्टडी करूछ त स्टडी रूम रो डिस्क्रिप्शन दे देला केते पाइबो 2 पेज रे गोटे एसे लिखिछि 10 मार्क पई केते मार्क पाइबो सुन बिग गोल्डन जीरो तक कहबी हला ना एग्जैक्टली से राहुल जो पिला से चिठी से लिखिछि এবং এই चैप्टर टी सेही बाबद रे अछि किछि एग्जाम वर्ड्स एवं जेमति तुमर पेटेंट आसीबो जनरली जो पैसेज रहबो गोटे पैसेज हला पैसेज तळे किछि क्वेश्चन रहबो ता संगे सेही पैसेज रे यूज हितिबा वर्ड्स रो मीनिंग बा वोकैबुलरी एंटोनिम्स एठी बैकअप वोकैबुलरी जोटा अछि पेज नंबर 48 रे एंटोनिम्स एंटोनिम हला वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग विपरीत अर्थबोधक शब्द सो एठी 10 टा अछि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैज ए जो वर्ड हमें पढि करी आसिले वर्तमान से वर्ड में नबा फर्स्ट राहुल रो चिट्ठी को पळैबा एग्जैक्टली तुम देखि भी जनरली जे परीक्षा हॉल रे एमती क्वेश्चन ते पढिथिले तुम केमती खोजि करी पांतो तो फर्स्ट थिंग पेज नंबर 45 को सम संगे डियर पापा दिस इज इन आंसर टू योर लेटर अबाउट माय ट्रांसलेशन यस माय पास्ट रैंक स्लिप हला खसी जिबा तळ को खसी जिबा सो एपटे क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन अछि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज स्लिप्ड फ्रॉम 15% टू 10% दिस ईयर ए वर्ष इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 15% टू 10% को खसी आसीची ऊपर से वाटर स्लिप्ड भी देछि हाथ चेंज करबो दरकार नहीं सो वोकैबुलरी डायरेक्टली स्लिप्ड आई हैव हैड a chance to this and I have realized that I should have been kinder. So I have had a chance to reflect रो अर्थ एठी चिंता करिबा so I have had a chance to reflect and I have realized एवं टिके रिफ्लेक्ट कला परे चिंता कला परे मु रियलाइज करली that I should have been kinder आउ टिके दयावान हेई परिथंत Anisha put her reputation at stake what a phrase is used here Anisha put her reputation at stake in order to save her criminal husband at stake ओडिया रे कहले हो बाजीरी लगेबा दाव पे लगाना जिसको सो तार जो रेपुटेशन अछि से रेपुटेशन पे एट स्टेक लगी छी राहुल जेमति राहुल फास्ट बॉय थिला तार पोजीशन सेकंड को जतबे आसी गेला त बापा को माने स्कूल अथॉरिटी चिट्ठी लिखिले त बापा तक तळे लिखिले तो काहे मार्क्स कमिला ता बदल से चिट्ठी लिखिची से चिट्ठी से लिखिची माय रेपुटेशन इज एट स्टेक मु सबले फास्ट बॉय थिली एवं गोटे मार्क गोटे प्रीपोजिशन रो भूल पाई मते मोर मार्क्स ता गोटे रैंक तळ को खसी सिम सेकंड ही जेची एंड माय रेपुटेशन इज एट स्टेक सो माय मदर was days that her son should not learn driving before the age of 18 herein you use adamant my mother was adamant that her son should not learn driving before the age of 18 adamant to hold that your belief your idea your thought is true but Rahul speaks about his teacher see Rahul says my teacher he is adamant that he was invited for tea I wrote I was invited to tea and my teacher was adamant was strong enough
was far on his idea that he was invited for T2 की जगह for होगा. So herein, so this is how we learn vocabularies. But a passage when you read the passage, when you read the letter for 2-3 times, you can quite easily be able to answer the vocabulary things. But prior to that, you should understand all the lines or the other words of the line. जोटा fill in the blanks रे जो गुटे word लगेबार अछि से word रो meaning जानले होबो नै पूरा लाइन टा जदि हमें बुझी परछु ताले हमें लगे पे सहज रे सुविधा ही परबा नले एमती सिखि दिले बा यार जो meanings अछि आंसर अछि परीक्षा रे एई गोटा को पड़बो नै बा एग्जैक्टली एई जिंसटी पड़बो नै हमकु कोन प्रैक्टिस करबार अछि एम्पल एग्जांपल एथि अछि comprehension passages are there गोटे पैसेज रहबो पैसेज रो तळे जेमती comprehension question थिला स्कूल मानकरे सेमती पांचटा क्वेश्चन रहबो 2 मार्क रो 10 मार्क रो तापरे गोटे vocabulary रहबो एंटोनिम्स और तार ग्रामर बेस करी रहबो 20 मार्क तुम रीडिंग रिलेटेड स्किल्स राइटिंग स्किल रे 40 मार्क्स आउ 40 मार्क्स रो ग्रामर हेगला 100 मार्क्स रो तुम जो असाइनमेंट जेमती लिखि छ असाइनमेंट गुडा को एग्जैक्टली सेम पैटर्न रे क्वेश्चन आसी बोले हम आशा करबा एंड I think you will all these 4 books were written according strictly keeping an eye to your exam patterns in mind. Every chapter you will have a comprehension passage, thereafter following some comprehension questions based on the particular subject. से जो passage दिया है जी passage पछाड़े 5टा 6टा 10टा 12टा क्वेश्चन दिया है जी छोट छोट क्वेश्चन लो आंसर तापरे किछि vocabulary दिया है जी सेही passage रे व्यवहार हेतबा किछि ग्रामर दिया है जी एवं तापरे राइटिंग स्किल अर्थात से भलिया जेंते डायरी एंट्री रो गोटे पैसेज हमें पढिले डायरी एंट्री पैसेज रो क्वेश्चन आंसर करले तापर गोटे क्वेश्चन अछि तमो निजो रो गोटे डायरी एंट्री गोटे दिन रो गोटे डायरी एंट्री करि करि देखाओ सेमति परीक्षा रे भी से आसबो जो भलिया कांसेप्ट में पढुचे डायरी एंट्री पढले गोटे लेटर्स पढले गोटे एसे धन्य जो गोटे लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर गोटे पढले फैमिली लेटर्स गोटे बापा गोटे पुओ गोटे ता बापा बाकु लिखिछि सेटा में पढिले ता ऊपर क्वेश्चन आंसर करले परीक्षा बेल को राइटिंग स्किल रे आसीबो निजे तमे हॉस्टल रे अछो बा तमर जो कोर्स अछि इग्नोर कोर्स इग्नोर परीक्षा पैटर्न बाबद वर्णना करी निज बापा किमा मां को चिट्ठी लिखो बा आ गोटे संग पक्कु चिट्ठी लिखो तमे परीक्षा रे केमति करिसो केमति प्रिपेयर करिसो परीक्षा पे सो दिस इज हाउ द एप्लीकेबिलिटी नाले खाली क्रेमिंग द थिंग्स लाइक दैट ऑफ दैट बिनु से पिला बळिया जदि हम खाली कहबा हिबिस्कस इज रेड एंड तोळे हिबिस्कस असल रे आसिला त हम येलो कलर करी छाडी दबा और सो डोंट put me the questions that hibiscus are yellow also. So herein a very beautiful example is given for your nervousness towards exam at page number 50. So speaking exercise, counselor's advice. Heading is counselor's advice for your exams. Educational institutions have counselors who help students to cope with their fears and anxieties of exams. Herein, Rahil is a boy and Dr. Matthew is the counselor. Good morning, sir. Good morning, Rahil. Sit down. How may I help you? Sir, my exams start next month. I'm scared that I might not do well. समस्त को लगे परीक्षा आगु सब पिला मन को सेमति लागे जे आमे होय तो भलो करिबुनी जानिबुनी केमति पढिबो कोन पढिबो but it is there. Why do you think so? Have you not completed your syllabus or revised well? तुम भल की पढिना बा सिलेबस पढाई छी ठीक अछि सिलेबस रे तुम रिवाइज ठीक से करिछो so yes sir I have revised it thoroughly but tension keeps me awake throughout the night and I feel I have forgotten everything. So se pila tar real hospitality kochi mu सब पढा पढी करूची किंतु पढी सरला परे immediately I feel that I have forgotten everything मते लागुची मु सब भूली जाउची तो परीक्षा रे केमति लिखिबी कोन लिखिबी so Dr. Matthew ताकु जो सजेशन दउचंदी सेटा जे the most important thing is to relax try and stick to a normal routine so परीक्षा समय रे be cool निजे जेमति हमें नॉर्मली लाइफ आज एबे जेमति रहउचू से वाला संत रहबा और परीक्षा पाई जो आवश्यक अछि परीक्षा आग दिन राति रे पढी करी क्लिक करी पकेबा सेमति हुए ने बा कोन गुटे सिलेक्शन कोठी आसी जिवो बा सैंपल क्वेश्चंस आसी जिवो এবং ताकू पढी देले से बळिया आइ जिवो it must be a regular habit every day you should when you are reading you should read as if you are sitting for an exam tomorrow सबु दिन रो पाठ पढाटा सेमति होबा कथा जे दरिना जो हमें जोटा पढले बर्तन काउंसलर्स एडवाइस अछि दरिना जो या ऊपर क्वेश्चन आसंता काउंसलर किए तो हमें जो पैसेज टे पढुचे साइमल्टेनियस तीनटा कथा इधर सिखबा एक तो लैंग्वेज सिखबा दुई रे कन्वर्सेशन टे भी सिखबा इंग्लिश रे कथावार्ता जाई कर जण सर को संगे इंग्लिश रे हमें केमति पचारि परबा जिनते राय जे पचरुची से प्रथमे ग्रीट करूची सर को गुड मॉर्निंग
जदि सकाल समय पहुंचला सकाल समय कहबा आमे गुड मॉर्निंग देखिले एवं गुड मॉर्निंग टा गोटे से ग्रीट कला सर को आमे जदि इवनिंग आवर रे पहुंची जा बहरे तो गुड मॉर्निंग लिखाई छै गुड मॉर्निंग कहबा हेले हबने तो हमको से अनुसार टिके चिंता करि करि निजको से अनुसार करे पड़बो सेटा तो सिखिले हम बट प्रैक्टिकल थिंग इज दैट इथरे जो कथाटी कहै छै जो क्वेश्चन बा जो कथाटी राहिल जो क्वेश्चन पचरुछि से क्वेश्चन टा पाका पाकी हम समस्त समान एज ए स्टूडेंट सबु स्टूडेंट मान को लागे जे पढिला बेले को से माने सब पढंती मने रखुचंती किंतु परीक्षा किछि दिन थाय तंग लागे सबुडा से माने भूली जाउछन तंग माइंड ब्लैंक हे जाउछि से माने सेटा होछि से डॉक्टर मेहटा कहला बळिया जे यू शुड नॉट वरी और ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ रिलैक्स रहबा ट्राई एंड स्टिक टू ए नॉर्मल रूटीन बट हाउ डू आई रिलैक्स आई एम टेंस ऑल द टाइम से पिला कोछि नाइ से मु तो सबल टेंस हे जाउछि मारे उत्तेजित हे जाउछि मते लागुछि मु सबुडा भूली जाउछि किछि परीक्षा रे करि परबि नै तो यू कैन ट्राई मेडिटेशन और योगा दिस विल हेल्प टू कूल योर माइंड टू रिलैक्स टू मेक योर माइंड रिलैक्स्ड से डॉक्टर मैथ्यू तक गोटे सजेशन दउछन्ते टिके मेडिटेशन करो ऑलराइट आई वांट टू डू रियली वेल एंड गेट गुड पोजीशन से कोच तापर से असल कथाटी से पिला कोछि जे आई एम नर्वस बिकॉज़ आई वांट टू डू रियली वेल एंड गेट ए गुड पोजीशन सब पिला मन पर सेटा थाए जे गोटा भलो पोजीशन हमें आनिबा दरकार कि भलो पोजीशन पई सब दिने भलो की पढिबा दरकार परीक्षार 15 दिन 8 दिन बा 10 दिन आगुरु बोल की पढि दवा बा नोट्स बनै पकेकरी बा मुखस्थ करि पकेबा सेतरे हबो नै एवरी डे यू शुड रीड लाइक जेंति कहली जे प्रत्येक दिन हमें जहां भी पढिबा एटा जरा ए पैसेज हमें बर्तमान डिस्कशन करू छे ए पैसेज रो जदी क्वेश्चन आसिला जहां भी क्वेश्चन आसिला जेंति हमें आंसर दे परबा तो प्रत्येक पृष्ठ हमें गोटे रूटीन एमती बनैबा कथा जे ए पेज जदी मु पेज 50 बर्तन पढुची पेज 50 रे गोटे भी डिफिकल्ट वर्ड्स को बिना डिक्शनरी सहायता रे बा न बुझिला जाय 51 पेज को जिबि नाही तो सब वर्ड्स रो मीनिंग गुडा जानिबी एतरे जो प्रश्न हे परिबो जेति से स्टूडेंट रो ना कोन से कोन पई मैथ्यू सर को पाकु जाईची से मैथ्यू सर को कोन प्रथम प्रश्न पचारुची मैथ्यू सर ताको प्रथम रे कोन सजेशन दउचंती से सजेशन टी केते दूर प्रैक्टिकेबल बा केते दूर पालन करा जाई पारिबो बा करबा उचित कि नह एभलिया यू आस्क सेल्फ क्वेश्चंस माने निजे पढिला बेले निजको निजे प्रश्न पचारिबा कथा निजको निजे जे छोट छोट प्रश्न पचारि कि हम सिखिबा ताले सेटा इजीली बने रहइबो से कांसेप्ट एवं हमें सहज रे गोटे कांसेप्ट मन रखिबा हमें कहबी नै जे एटा गोटे 60 पेज रो गोटे ब्लॉग रो गोटे बही अछि एवं यू शुड रिमेंबर ऑल द पेजेस इट इज इम्पॉसिबल टास्क पूरा 60 टा जको पृष्ठ जेमती लिखाइ छि सेमती मन रखिबा असंभव कथा बट व्हाट यू कैन डू यू कैन इथरे गोटे सपोज नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन अछि इंटरोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्यटी करा है तो प्रश्नवाचक वाक्यटी जते बेले करा होछि प्रश्नवाचक वाक्य जेमती हम टिके आगु डिस्कशन करले जे यस नो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन सेतिक बेले कोह जाउछि जते बेले क्वेश्चन रो आरंभटा गोटे सहायकारी क्रिया बा डू डज डिड हैव हैज एभला जदी अछि अर्थात गोटे हेल्पिंग वर्ब रे जदी सेटा आरंभ होउछि ताले तार आंसर टा आइदर यस हबो बा नो हबो अतः हमें यस नो क्वेश्चन काहा को कोह जाउछि ताको केमती आरंभ करा जाई परिबो से कथाटी हमें कहि परिबा जदी हम से कथाटी कहि परुचे बा से कथाटी मन रखि परुचे ताले यस नो क्वेश्चन जे कोनसे प्रकार यस नो क्वेश्चन हेले भी हमें वरीड हबा नै सो हमें आसीबा एबे मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ए जो पार्ट रो आज रो लास्ट ग्रामर डिस्कशन तापर हमें समरी आड को जिबा टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ता आगु मते कहि देबी क्लॉज कहले कोन क्लॉज रो डेफिनेशन हबो क्लॉज गोटे लार्जर सेंटेंस रो गोटे पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस गोटे क्लॉज होची गोटे बडो सेंटेंस रो गोटे पार्ट सेथरे गोटे क्लॉज रे you will get one subject and a predicate but the clause cannot stand by itself अर्थात क्लॉज रे सब्जेक्ट थिबो वर्ब पे थिबो किंतु ताहा निजे निजे अर्थ प्रकाश करबा पई सक्षम हेइ नथिबो हेले सेटा को क्लॉज कहबा दैट विल बी कॉल्ड एज क्लॉज क्लॉज केते प्रकार अछि दि प्रकार गोटे कोऑर्डिनेट क्लॉज गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस रे यूज हेछि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंग्लिश रे अछि एंड बट सो येट स्टिल अदरवाइज नाइदर नॉर आइदर और एगुडा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहां डेटा फ्रेज को डेटा सेंटेंस को जोड़िया पे व्यवहार होय तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सहायता रे जो क्लॉज होबो से क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहबा एवं गोटे मेन क्लॉज संग रे कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ी करी हमें कोन पाइबा गोटे कंपाउंड सेंटेंस बा यौगिक वाक्य पाइबा तो गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे कोन होबो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे मेन क्लॉज रहइबो
आमे बुझिबो जे मेन क्लॉज कहले कोन मेन क्लॉज हला जो क्लॉज टी जदि हम गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गोटे जटिल वाक्य लिखिले तो गोटे लंबा सेंटेंस लिखिले से लंबा सेंटेंस रे गोटे सिंपल सेंटेंस बा गोटे मेन क्लॉज रे को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोली कहि परिबा जो क्लॉज निजे निजे अर्थ प्रकाश करिया पई सक्षम अर्थात सबु क्लॉज माने सेंटेंस नोंती सबु सेंटेंस माने गोटे गोटे क्लॉज हे परिबे तो सिंपल सेंटेंस गुडा जोडा अछि सब्जेक्ट प्लस वर्ब भलिया बेसिक स्ट्रक्चर रे जो सेंटेंस अछि सेगुडा को हम क्लॉज कहि परिबा जेतेबेले से निजे निजे अर्थ प्रकाश करिवो सेतेबेले सेटा सिंपल सेंटेंस हे जिवो अर्थात गोटे क्लॉज रे गोटे सब्जेक्ट थाए बा कर्ता जोटा कहउचे एवं क्रिया थिबो कर्ता क्रिया थाई कि वाक्यटे गठित हेतिबो किंतु से वाक्यटी अर्थ प्रकाश करि परिबो नाही जेमिति मु जाने बा मु विश्वास करे आई बिलीव और आई नो दीटा मात्र वर्ड अछि गोटे आई प्रोनाउन टी यूज हला मोना अछि ता बदले मु यूज कली आई टा प्रोनाउन हला सब्जेक्ट हला सेतरे आई नो किबा बिलीव भार वेला कि ता पर जदि किछि गोटे वर्ड न लगौची सेटा मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दबो नाही अत सेटा सेंटेंस न होई कि क्लॉज हबो किंतु मु जदि कहे बर्ड्स फ्लाई चढ़ई माने उड़ंती सेतरे आउ किछि कथा कहबा दरकार नाही सेतरे भी गोटे सब्जेक्ट गोटे वर्ब अछि बट दैट इज अ सेंटेंस बट बिकॉज़ इट कैन गिव यू ए कंप्लीट मीनिंग तो यू हला सो आई नो वेयर रमेश लिव्स जेउठी रमेश रहे बर्तमान हम ए दीटा को जोड़ी देबा आई नो जे टिके अर्थ प्रकाश करूची आई नो मु जाने कोन जाने वेयर रमेश लिव्स ए जो वेयर रो अर्थ होबो जेउठी रमेश रहे ए जो जेउठी रमेश रहे वेयर रमेश लिव्स इटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज एवं ई सब बेसिकली गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हेबे अर्थात गोटे जटिल वाक्यर गठन रे जो दीटा पार्ट रहबे तो मेन क्लॉज संपूर्ण अर्थ प्रकाश करे पई डिपेंडेंट क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऊपर निर्भरशील थिबो सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्य संपूर्ण अर्थ प्रकाश करे पई मेन क्लॉज ऊपर निर्भरशील थिबो सेटा हला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एठी किछि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रो कथा कुआ हैछि यू एडवाइज्ड दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स यू एडवाइज्ड यू सब्जेक्ट हला एडवाइज्ड पेज नंबर 50 रे अछि रीड द एग्जांपल्स रे 4.6 ग्रामर जोटा अछि मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज So 50 page रे number 1 अछि देखो you advised that I should think before answering the papers. You it is subject advised हला verb हला so इटा हला main clause. ई पार्ट रे जो that रे आरंभ हला that रू एपोटे जहा रहला सेटा हला subordinate clause because subordinate that सेतरे जुड़ा अछि. That I should think before answering the papers. I सेतरे पुनी subject हला should think verb हला other things सेतरे रहला. ने जो that हला जे मु चिंता करी लिखिबा पूर्वरु आंसर पेपर लिखिबा पूर्वरु चिंता करी करी भाबी करी लिखिबी सो से पूरा सेंटेंस रे राहुल दा आपन कहला आपन उपदेश देइ छंती जे मु भाबी करी लिखिबी ई जो जे मु भाबी करी लिखिबी जदी यू एडवाइस रखिबी नाही ए सेंटेंस धरो नाही हमें गोटे सेंटेंस कोन पाइले बर्तन दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग पेपर्स जे मु भाबी करी आंसर लिखिबी ई जो जे मु भाबी करी जे माने कोन ता आगु किछि रहिला बोले हमको लागुछि ना तो सेति पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बा डिपेंडेंट क्लॉज बा निर्भरशील उपवाक्य बोली कहबा एवं गोटे मेन क्लॉज संगे देखो जुड़ले हम गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तयारी करी पारिबा एक्जेक्टली सेमति किछिटा दिया है जे एग्जांपल एतु बाछबो को अछि हमको तो प्रिंसिपल कहले पुनी मेन क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज आउ सबऑर्डिनेट क्लॉज म आंसर कहबी फर्स्ट पार्ट रो जोटा द बॉय हु रैन अवे वेयर द कल्प्रिट्स द बॉयज हु रैन अवे where the culprits एथिरे दीटा क्लॉज अछि मेन क्लॉज टी हबो कि the boys where the culprits subordinate clause but dependent clause जोडे कहबा सेटा अछि who run away he sold his old books to a boy who never paid him a single penny for them ए जो who to onwards who एला relative pronoun दे तो relative pronoun रो onward जोटा जुड़ा हेछि ए जो पार्ट हला so who never paid him a single penny for them एटा subordinate clause फर्स्ट जोटा रहला he sold his books to a boy सेटा मेन क्लॉज अछि सेंटेंस रो सेमति एठी क्वेश्चन होछि पिक आउट द प्रिंसिपल एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज हम जेमति कहले सबऑर्डिनेट क्लॉज रे गोटे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर सबऑर्डिनेटर हु व्हिच दैट हुज whom where how ए भलिया शब्द माने व्यवहार हेतिबे एवं तापरे जो पार्ट जुड़ा हेतिबो तापरे सेही कंजंक्शंस मान सहित जो पार्ट जुड़ा हेतिबो सेही पार्ट रे गोटे सब्जेक्ट थिबो तार गोटे वर्ब भी थिबो किंतु सेटा संपूर्ण अर्थ प्रकाश करिया पे सक्षम हो नथिबो हेले सेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज हबो जो पार्टी मेन क्लॉज बोली कहबा से सब्जेक्ट थिबो प्रेडिकेट बा प्रेडिकेट रे गोटे वर्ब थिबो एवं से निजे निजे अर्थ प्रकाश करिवारे बेसी भाग सक्षम होथिबो संपूर्ण सक्षम होतले ताको सिंपल सेंटेंस कहबा जदी संपूर्ण सक्षम हलानी ताले सेटा मेन क्लॉज हबो बा प्रिंसिपल क्लॉज हबो से
बहुत बेसी भाग अर्थ प्रकाश करि परुथबो एवं ए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हला ता ऊपर किछि मात्रा निर्भरशील थिबो एवं दीटा जको मिसिले हमें गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पाई परिबा। एंड द लास्ट पार्ट रे आसीबा एटी जेमति गोटे 7 नंबर क्वेश्चन टे अछि हैड आई बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। एटा हम इफ क्लोज कंडीशन कहला बेल को करथली इमेजिनरी कंडीशन रे आई हैड v2 फॉर्म रे अछि त खाली इफ टा उठे के हेड लगैछि हैड आई बीन रिच जदि मु धनी हेई थांती ताले आई वुड हैव हेल्प्ड हिम मु तांको सहाय्य करि पारि थांती मु धनी होइतिले तांको सहाय्य करि पारि थांती। हम ओडिया रे एमति सेंटेंस कहबा इंग्लिश रे लिखिला बेल को हम एमति लिखिबा हैड आई बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 7 नंबर बिट पेज नंबर 51 जोटी हम सबऑर्डिनेट आ प्रिंसिपल क्लॉज रो क्वेश्चन डिस्कशन करूचे। लास्ट पार्ट रे एसे जो एसे अछि एसे राइटिंग अपन मन को समस्त को जणा अछि गोटे एसे राइटिंग एसे रे मिनिमम 5टा पैराग्राफ रहबो गोटे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रहला गोटे कंक्लूजन पैराग्राफ रहला जो मझी भागटा जोटा हम मिडिल पोर्शन बोली कहूछु सेटा तदि डिस्क्रिप्शन पार्ट हला डिस्क्रिप्शन रे आवश्यकता को देखि करी हमें गोटे किबा दुईटा किबा तीनटा पैराग्राफ मिनिमम करि परिबा। सो गोटे परिवर्तित पैराग्राफ हम पैराग्राफ राइटिंग बाबत डिस्कशन करथिले गोटे निर्दिष्ट आइडिया बा चिंताधारा उपरे किछि गुडाय परस्पर संपर्कित वाक्य मानकर समाहार को अनुच्छेद वा पैराग्राफ कहबा एवं एक्सटेंडेड पैराग्राफ्स बा परिवर्तित पैराग्राफ माननकु एसे कहबा। तो एसे रे गोटे एसे रे सर्वनिम्न भाबरे हमें तीनटा पैराग्राफ रखि परिबा द बिगिनिंग जोटा हम इंट्रोडक्शन कहूचे द एंड बा कंक्लूजन कहूचे मझीटा डिस्क्रिप्शन बा द मिडिल किंतु डिस्क्रिप्शन रे हमें गोटे कथा जेतु कहू नाय तेनु हमर आवश्यकता को देखि कि उपकारिता अपकारिता वर्णना इत्यादि जो कथा हमें जेते ओडिया रे लिखुछु सेंति करी कि ताकु दुटे किबा तीनटा पैराग्राफ रे लिखि परिबा एवं सो दैट एन एसे फॉर 10 मार्क्स शुड हैव 5 पैराग्राफ्स एट लीस्ट सेतिर तीनटा पांचटा पैराग्राफ रहबा कथा एसे बही माने अवेलेबल अछि एसे लिखे पय मोर धारणा रे किछि असुविधा होबने। आ गोटे पर्सनल लेटर रो एग्जांपल अछि एट पेज 52 पर्सनल लेटर जेंति कहली पर्सनल लेटर गुडी को परिवार लोक मन करथार बापा मां कका भाई इत्यादि मन को पाकू बा संग मन को पाकू लेखा होतबा सोशल कॉन्टेक्स्ट रे ग्रैंड पेरेंट्स मन को पेरेंट्स मन को पाकू फ्रेंड्स मन को पाकू रिलेटिव्स मन को पाकू लेखा होतबा चिट्ठी गुडा को हमें इनफॉर्मल पर्सनल लेटर बा सोशल लेटर बा इनफॉर्मल लेटर कहि परिबा ओ एप्लीकेशन गुडा को हमें फॉर्मल लेटर कहबा। तो लेटर ऑफ एसे जेमति अछि राइटिंग स्किल रे अछि जतिर तमर जो राइटिंग स्किल आसीबो सब गुडा को 250 वर्ड्स भितरे एवं जो पैटर्न अछि से पैटर्न गुडा को जेमति चैप्टर वाइज अछि जेमति कहली गोटे पैसेज रहइबो से पैसेज रे किछि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रहइबो से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रु व्यवहार होतबा नवा शब्द बा वोकैबुलरी रहइबो तार एंटोनिम्स तार सिनोनिम्स ताकू मेक सेंटेंसेस तापरे किछि टिपिकल ग्रामर जो ग्रामर हमें वर्तमान पर्यंत डिस्कशन करि के आछि फ्रेजल वर्ब्स हला तापरे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एबे आज जोटा डिस्कशन करले ता अगर इफ क्लोज सेंटेंस दे डिस्कशन करा हेतला ए जो सब ग्रामर हला ए ग्रामर को बेस करि किछि टिपिकल ग्रामर एवं तार यूज अर्थात से गुडे को सेंटेंस रे बाछिबा कोटा क्लोज कोटा मेन क्लोज कोटा इफ क्लोज कोटा डायरेक्ट स्पीच रो सेंटेंस रे कोटा इनडायरेक्ट स्पीच रो सेंटेंस तापर किछि वोकैबुलरी जोटा आसुची कोन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज जतरे सही वर्ब फॉर्म्स लगेबाटा भी टेंस का भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज आसी परिबो। सुविधाटी होची जहां हमें फिल इन द ब्लैंक्स रे लिखिबा सेटा ऊपर गोटे बॉक्स रे दिया हेछि सेइथिरु आवश्यकता को अर्थात सेंटेंस रो मीनिंग टा बुझि कि हम सेटा कोनी के लगे दबा देइछि बोले गोटे आनि के लगे दबा जोटा तार मीनिंग हो नथिबो सो सेथिरा में असुविधा रे पड़बा। So now it's time for you people to ask. आज गोटे चैप्टर अछि परीक्षा मन को विषय रे परीक्षा एवं गुडा बर्निंग इश्यूज हमें सुन लेनी गांधी को आरंभ करी ये जाए। So if you have any questions in particular you may ask. कहारी जदि किछि प्रश्न पचरिबार अछि आज जहां हमें डिस्कशन करली strictly from book 4 unit 2 unit 3 and unit 4 यूनिट 2 रे हम डायरी एंट्री सिखिले यूनिट 3 रे लीडरशिप क्वालिटीज बाबत रे सिखिले गोटे यंग लीडर रो स्पीच रे भी अछि एंड देन गांधी जी को प्रिटोरिया गस्त बाबत रे गांधी केमती हाउ ही वाज इन द मेकिंग ऑफ महात्मा से जो महात्मा हबार जो प्रोसेस प्रथम जो राती से अपमान सहिले गोटे राती रे बाहर से प्रिटोरिया भलिया जो मार्टिसबर्ग जो ये कथा कहउछन जो हिल स्टेशन रो कथा कहउछन जो पहाड़ी अंचल रो जो रेल स्टेशन रो कथा कहउछन जोटी ताको गोटे गोरा लोक से कंपार्टमेंट बाहर को फिंगी देला सेही राती रे से डिसाइड करले नाइ एठी वर्णमय समय बाबद रे मते लढिबा को अछि एमान को न्याय देबार अछि इनडायरेक्टली मोर न्याय पाइबार अछि एवं ता द्वारा एठी साउथ अफ्रीका रो कला लोक माने उपकृत हेबे सेही जो
ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ सक्सेस आनी दिथिला सक्सेस को भित्ति करी से आसिले और सेही फार्मूला इंडिया रे आपणैले एवं एडे बड़ गोटे माइटी जो ब्रिटिश एम्पायर जहार के सूर्यास्त हुएनी बोली कहउतला से दोहली गला हमें पाइलु द थिंग दैट विदाउट एनी वेपन्स सेमति किछि बड़ धरणर विप्लव बा आंदोलन हमर नाही हमर जो आंदोलन हला सत्य और अहिंसा पीस एंड नॉन वायलेंस। तो आज जो डिस्कशन है जो 3टा यूनिट 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जदि कहार कोन डाउट्स अछि बा जदि किसी के पचारबे को चाहूछ यू आस्क इट इज योर सेशन नाउ क्वेश्चंस। सर ये जो क्वेश्चन पैटर्न सब या भितर अछि ईच चैप्टर वाइज तो से टाइप रो ही क्वेश्चन आसीबो कि हमरो एग्जाम रे आउथरे एग्जाम रे कोन एई चैप्टर वाइज जेमति अछि तो एग्जैक्टली सेमति पेटेंट सेया गोटे पैसेज रहइबो से पैसेज तळे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रहइबो जेमति क्वेश्चन रहउची ता तळे कोइ सेही पैसेज रे व्यवहार हेतिबा शब्द मानकु नेकरी वाक्य गठन हैला विपरीत शब्द हैला सेमति ग्रामर रहइबो तापर टिपिकल जो ग्रामर यूज हेछि सेथिरे से ग्रामर बेस रे क्वेश्चन रहइबो और राइटिंग स्किल्स किछ रहइबो जेमति असाइनमेंट रे तमे करि करि दैछो। अच्छा 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 सर मु एक्चुअली गोटे कथा आपण पचारे मु ए पर्यंत असाइनमेंट किछि देइनी जस्ट एबे 5 दिन हैला जो क्लास होछि मु अटेंड करछि 2019 तो सेटा मेरा प्रॉब्लम थिबो ना असाइनमेंट रो ये रे थिबो ना आपण पाखरे डाउनलोड करिछन ना ताकू नाही सर मु किछि करिनी असाइनमेंट गुडा अछि कि नाही ना हां तो असाइनमेंट गुडा रे आंसर ही बहिरो हेल्प नै करी खोजंतु सबको लिखि करी जल्दी पठै दियंतु सतरे। ओके सर हमर कोन एथरे लिंक जो देइथिले से लिंक रे अछि कि असाइनमेंट सब सर हां लिंक जो दिया हेतले सेथिरे अपलोड कर देले हबो। अच्छा सर पठाइतला गोटे खाली पुनी पिला माने रिक्वेस्ट करथिले बोली खाली हमें पुनी गोटे पठाइतला अलगा एथिरे ये करंतु कहि करी आ जदि सेटा भी सुविधा नुहे ताले ऑफलाइन ये आनी करी स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर पाखरे आंसर टा आनी करी दे दिल भी हबो आपण सर विथिन के जो स्टडी सेंटर आपण स्टडी सेंटर जो कोऑर्डिनेटर अछंती तांको पाखरे असाइनमेंट रे आंसर टा लिखि करी हार्ड कॉपी आनी करी सबमिट कर देले भी हबो। क्वेश्चन हम कोट पाइबो सर क्वेश्चन केमति कोन पाइबो असाइनमेंट पाइ बोली हेलो हां कोन असाइनमेंट पे पूछत ना कोन हां सर हां तो असाइनमेंट रे क्वेश्चन गुडा थिबो ना ताको आंसर गुडा लिखि करी आदर निजे जदी अपलोड करि परजो कर दो वेबसाइट पे जा तो सब अछि असाइनमेंट नले इग्नू वेबसाइट रे देखो पूरा डिटेल्स तो लिखा है इट इज वेरी मच माने स्टूडेंट फ्रेंडली सब खाली पूरा लिखा है स्टेप वाइज लिखा है कोन कोन कोठी कोन करबो पड़बो जदी किछि भी करि पनहंती असाइनमेंट टा लिखि लिखा करी आनी करी कोऑर्डिनेटर को पाखरे दे दियो आपन स्टडी सेंटर रो कोऑर्डिनेटर पाखरे से जो हार्ड कॉपी दे दियो तो हे अच्छा सर मु आज बुझी भी कोइ आ सेटा से जो पेटेंट रे जो क्वेश्चन आंसर करिवे तो मार्किंग जोडा दिया है जो जो सेक्शन रे जति मार्किंग दिया है बोते फाइनल भी से भले आबो कारण एटा फर्स्ट टाइम आपन माने ए भले परीक्षाटा देबे तम। अच्छा सर ए जो पेटेंट रे हेची पेटेंट रो फर्स्ट परीक्षाटा हेई तांते कोरोना पय तो हेई नै परीक्षाटी तेनु सैंपल क्वेश्चंस तो पीएम जहां दिया है जो असाइनमेंट रे सेही पेटेंट रे क्वेश्चन टी आसी बोले हम आशा करू। अच्छा सर परीक्षा हेई परिबो कि हेई परिबोनी सर सेटा इग्नू कहि परिबा हम सेटा कहि परिबे अच्छा रीजनल कोऑर्डिनेटर कहि परिबे सब्जेक्ट रो क्वेश्चन किछि पचरन एते गुडा कथा डिस्कशन होला कि थरे थरे सुनि के अपन सबटा बुझिले सर नेक्स्ट पुनी बेगला 136 रो भी क्लासेस हबो ना हां हे पर जदी सेडू आसीबो हले हमें करबे इग्नू जदी कहबो हले करा जबो निश्चय हम एटा जदी हला 135 जदी हला 136 हबो ना ओके सर सर बुक्स तो किछि मिलेनी डाउनलोड करी की कले अरे 135 रो काम सरी नै 136 कहले केम हबो 135 सरले 136 मिलिबो ओके सेटा न अरे मु पचारली जे जहा पढाला बुझिलो ना यस सर 6 दिन रो जो पाठ पढा हला सेते किछि लाभ हेतिबो हाँ सर किछि अपन मन को बेनिफिट रे लागिवो कि लागिवोनी हाँ सर बेनिफिट हुआ सर नहीं लागिले परिश्रम सार्थक हला बोली बुझिबा नहले तो गला यस सर
सर एग्जाम में मतलब इसी बुक से मिस्टर आएगा कि यादव, फिर अलग से आएगा? सर आप एग्जाम तो ओडिया में नहीं समझ रहे होंगे। नहीं सर, बहुत कम समझता हूँ सर। यहाँ पे वन वन ईयर हो गया रहते हुए इधर, थोड़ा यस, थोड़ा मतलब समझता हूँ सर, बहुत कम समझता हूँ सर। ओ समझते हो। हाँ बहुत, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलने को टिके नहीं टिके। होता है, उड़िया कोई बोलता है फिर भी समझ जाते हो थोड़ा बहुत। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर ये पूछ मतलब रहा था कि जैसे एग्जाम में, काम सर चलाने के एग्जाम लिए में हो गया मतलब, आपका। सर एग्जाम में ये मटेरियल यही आएगा फिर या अलग से भी नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो पैटर्न जो असाइनमेंट में जैसे दिया गया है उसी टाइप का पैटर्न में आएगा। आपका अच्छा सर। रीडिंग सेक्शन का मार्क भी साइड में आप देखे हो। फिर राइटिंग सेक्शन में भी मार्क है, और ग्रामर सेक्शन उसी टाइप का आएगा। रीडिंग, हाँ राइटिंग एंड नहीं, ग्रामर। जैसे सेम सेम अगर हम इसी बुक को प्रिपेयर करके जाएं तो इसमें कौन से से बुक मिल को? जाएगा ये जो या ब्लू, फिर पैट वो जो बस यही चार रहेगा? ब्लॉक वाला जो बुक है तो। जी सर जी। हाँ वही तो पढ़ना है, और क्या ओके। पढ़ोगे? नहीं सर, वही इसी बुक मतलब, का तो पढ़ना है। ठीक है इसलिए सर तो दिया ठीक। है, चार ब्लॉक दिया है, और चार अलग अलग इशू को बेस करके दिया है। आप असाइनमेंट को देखो, इसी में से आया है वो असाइनमेंट क्वेश्चन सब। हाँ सर, असाइनमेंट हमने सबमिट हाँ, कर दिया। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस आर इन ए वे प्रिपरेशन टुवर्ड्स योर फाइनल एग्जाम्स। आपको यस फाइनल सर। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो असाइनमेंट क्वेश्चन है। जी क्या सर। पता उसी में से भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो व्हाइल यू आर आंसरिंग द असाइनमेंट्स, यू शुड सीरियसली प्रिपेयर दैट। हो ओके सकता सर। है तो एक एक कॉपी उसका रखो, जो डिपॉजिट कर दिए हो उसका एक एक कॉपी हाँ रखो, सर उसी मैंने, प्रिपेयर करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आंसर ना, ये बुक से उसको ढूंढो और लिखो, जो लिखे हो उसको रख के वो पढ़ के उसी से प्रिपेयर करके जाना। हाँ सर मेरे मैंने हिसाब हार्ड से कि कॉपी वही सबमिट क्वेश्चन कर मिल दिया जाए था। और यू कैन स्कोर वेल। मैं हार्ड कॉपी सबमिट कर दिया हूँ सर असाइनमेंट का, लेकिन आप उसका फोटो रख कॉपी नहीं लिया हूँ रखे उसी हो? से। फिर फोटो ले लिया था सर। हाँ, फोटो ले लिया तो बस। आप जैसे आराम से पढ़ पाओगे ऐसे करो, वही बोल रहा हूँ। जी सर। आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसी को पढ़ोगे और ये हो जाएगा। चांसेस है एक दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए, मैंने आ जाता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो आपका तो काम बन जाएगा ना। जी सर। ओके। और कोई और हेलो सर। डेफिनेट क्वेश्चन के साथ? हेलो सर। हेलो। यस। हेलो सर। सर हेलो। पेज नंबर 35 रे। सर पेज नंबर 35 रे। पेज नंबर 35। आगे। हाँ, पेज नंबर 35। सर हाई के उसको 35 उसको हाँ, वीडियो का पेज नंबर 35, राइट। ठीक है सर्च फुल है। यू आर नॉट क्लियर। कौन पचारुଛ ଶୁଣା सर ଯାଉନି, ଆଉ हाई ଟିକେ ଭଲକି ପଚାର। सफारी। पेज सर नंबर हाई 35 ର कैन କୋଉ ନମ୍ବର? सफारी जो दुटा दिए पेज नंबर 35 ର କୋଉ नंबर? कॉल कॉलम भी दे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3? कॉलम ए एंड कॉलम बी जो दिया है हैं? कॉलम हाँ, ए एंड कलम ए कॉलम बी जो कलम दिया बी है। दिया ହେଇଛି। 34 ରୁ ଆସିଛି ସେଟା ତ 35 ଯାଏ। आगे हाँ। सर। Gandhi was traveling by train. In other सर हाई words, कैन he was going on a journey. There are many words for journey. Match the words in column A with the phrases in column B. ସେଇଟା ପଚାରୁଛ ତ? हाँ ହଁ। सर से जो हाई कैन सफारी वर्ड ହଁ, बी कॉलम रे ସଫାରି ता କେତେ पे यूज ନମ୍ବରରେ ଅଛି? 8 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ସଫାରି ଅଛି ତ? सर। ସଫାରି को କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମେ? An hunting expedition. An expedition for hunting or observing wild animals. ସଫାରିଟା ଗୋଟେ ଇଏରେ ଯୋଉ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। An expedition for hunting सर or observing wild ठीक है animals. सर। बिट ए रे जोटा अछि, बी कलम रो फास्ट हाँ जोटा सर अछि। थैंक यू सर। आज्ञा। आउ 5
बी नंबर ट्रेक जोटा कहूचा ट्रेक ले लॉन्ग वॉक इन द कंट्री साइड दैट यू गो फॉर प्लेजर हाँ हाइक हाइक जोटा अच्छी हाइक टा जो जणी हाइक टा होची सी बीट जणी व्हेन यू विजिट सेवरल प्लेसेस दैट इंटरेस्ट यू पेज नंबर 42 रे देखो यार आंसर टे दिया है छी पेज नंबर 42 रे जो आंसर दिया है छी स्टैंडर्ड आंसर सेटा के फॉलो करो नहले जदी क्लियर होउनी ऑडियो जदी क्लियर सुना जाउनी ताले पेज नंबर 42 रे सही क्वेश्चन रो आंसर अछि चेक अप योर आंसर्स रे 42 रे आंसर टे अछि देखो ओके सर पाइली आ सेटा को कंफर्म कर दो सेटा से माने दिया है छी सेथरे आंसर स्टैंडर्ड आंसर सेटा सबु चैप्टर रो पछड़े जो क्वेश्चन अछि चेक योर प्रोग्रेस आज्ञा सर लास्ट पार्ट रे सबु रो गोटे स्टैंडर्ड आंसर दिया है छी किंतु प्रथम रो माने इंस्ट्रक्शंस अछि जे सेटा को सीधा कॉपी करो नै प्रथम निज हिसाब रे बुझी के देखिबा एंड देन ताकू क्रॉस चेक करी करी तारो पॉजिटिव नेगेटिव साइड को बुझे चेष्टा करले बेटर मने रहला तो जदि डाउट रे अछो ले से क्वेश्चन से जो क्वेश्चन ए बी मैच ए विथ बी तार आंसर 42 पेज रे अछि आज्ञा आउ क्वेश्चन तो टाइम अभी ये भी करो क्वेश्चंस प्लीज आउ किछि काहर पछारिबार अछि or else we will come close to our discussion language discussion आज एठी सरी गला okay let us close the discussion for today सर गुड इवनिंग मते गोटे पचारिबा थिला हां सर मु 2020 रे जॉइन करिछि हेले मोर असाइनमेंट सबमिट रो किछि मेसेज आसीनी मु केमते ये असाइनमेंट सबमिट करिबी आउथरे मु कहिली 2020 जनवरी रे मु जॉइन करिछि इग्नो हां हेले मोर रे किछि मेसेज आसीनी कि तमे असाइनमेंट सबमिट करो और किछि तो मु केमते करिबी मु जानिनी ना करिबी कि नहीं कारण एई माने जो माने असाइनमेंट सबमिट करछन्ती से मन तो 90 ये 2019 रो जुलाई रे जॉइन करछन्ती माने आ मु एई 2020 रे सो कोन पता सिकुची मु 2020 रे जॉइन करछि जान करनी केते बळे करती असाइनमेंट देबी मो बाबू कारण असाइनमेंट देबे नै तुम नवंबर सुधा देबे तुम वर्ष पर परीक्षा दो तुम असाइनमेंट आप 19 रो एडिशन सीधा क्लियर कर दियो नहीं असाइनमेंट एबे नहीं तुमको असाइनमेंट तुम वर्ष के कोर्स नु की ना मते तो सार तो माने 19 वाला अछि से मन को पई एटा असाइनमेंट अछि अक्टोबर नवंबर भीतर हां तेनु जो माने जनवरी 2020 रे करचंती समानकर डिसेंबर प्रोबब्ली जो एग्जाम डेट ता पूर्व नवंबर सुधा अक्टोबर नवंबर रे असाइनमेंट सबमिट करबार अछि हां सर जो असाइनमेंट को सुनु जो अनुमान को सुनु जो माने 19 वाला समानकर अर्लियर थिला ए जो इशू पॉइंट के डिस्टरबेंस पई एपट सपोर्ट हेची तेनु से माने दे परबे एटा तमन पई टाइम अछि अक्टोबर नवंबर रे अक्टोबर नवंबर सुधा तुम सेटा दे परबो एंड डिसेंबर तुम एग्जाम मे भी हां सर किंतु 2019 और 2020 सब सेम ना की हां सब सेम जे कि समान तो आगरु एडमिशन करचंद रे 6 मास आगरु वर्ष आगरु हां सर सेटा पचारुथिली कोर्स तो सेम अछि ठीक अछि एडमिशन तो डेट फरक करछि ना
ହଁ ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଥିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ନା। ତାହେଲେ ତ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ କିଏ 2020 ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। କୋଅର୍ଡିନେଟର ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ କଣ ପଚାରୁଛ କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି କି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଓନ୍ଲି 2019ରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ 2020 ବାଲା ଅଟେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ହଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅର୍ ମୋର ସେମ୍ ଅର୍ ଅଲଗ ଅଲଗ। ସେଇଟା କହିହବନି ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିଶ ହବ, ଇଗ୍ନୋ ପବ୍ଲିଶ କରିବ। ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହେ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତମର ପୁଣି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଇଗ୍ନୋ ସାଇଟ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିବ, ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରି ସବମିଟ କରିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଦୌ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ୟୁ ହେଲା। ହଁ ସାର୍ କାରଣ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ଭସ ହେଇଯାଉଛି କି ସେଇମାନେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ନର୍ଭସ ଆଦୌ ହୁଅନି। ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝ। ତମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆଡମିସନ ନେଇଛ, ତମର ଅଧା ବାଟ ବି ତମେ ଯାଇନ। ତମେ ଟାଇମ୍ ଆସୁ ତମେ ଇଏ ସଲ୍ୟୁସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୁଲାଇ 19ରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ହଁ ସାର୍। Okay, I don't think any of you have any question, any more question to ask. So with this, we come close to our discussion in language 135. Okay, so before closing, I may wish you happy return journey of Lord Jagannath. ବାହୁଡା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। Okay, thank you, ଆଉ sir. Same to you. ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ବି। କରିବା ଆଜି। ଯଦି କିଛି ବେନିଫିଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷ କିଛି ସାର୍ ଯେମିତି କାଲିଠୁ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାसेସ୍ ମାନେ ବି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेସ୍ ମାନେ ବି ହବ। ଆଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ you people to join and take maximum benefit out of your sellers over there. ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି 2 ତାରିଖରୁ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି ହବ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କାଉନସେଲର ଗଠୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିକିରି ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ ଅଛି ବା ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରୁଛି ସୋ it is better and it has been designed for you people. My request would be that you should join in more numbers and as usual the books ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ବହିଟା ଟିକେ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପଚାରିପାରିବେ। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ପଢିଲା ବେଳେ ସବୁଟା ବୁଝି ହବ ସେମିତି ବି ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେସନ ରଖିକିରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଚାରନ୍ତୁ, କେହି କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଟା କାଉନସେଲର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉନି ନା, କାଉନସେଲର ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାଉନସେଲର ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ଯୋଉ ବହିଟା ଗୋଟେ ବହି ପଢି ବହିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିରି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ ଏଇଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି। ସେଟା ରିପିଟେଡଲି କହିଲା ପରେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ସେଟା ତ କଭର ହେଇଗଲା ଇଂଲିଶ। ବଟ୍ ଆଇ ସୁଡ୍ ସେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର ଅଦର କାଉନସେଲର୍ସ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ବହି ଗୁଡା ଟିକେ କରିକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିରି ଆପଣ ଜାଗାରେ କଣ ଯୋଉ ବହିର ପଛରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଛରେ ପ୍ରାୟ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରିଲେ କାଉନସେଲର ସେଇଟା କହିବାକୁ ତାକୁ ଇଜି ହୁଅନ୍ତା, ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ତାକୁ। ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ବି ବେନିଫିଟ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଫର ଦ ରେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Okay, thank you, Thank sir. you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବାଏ। ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ସାର୍ ମୋର ତ କିଛି ବୁକ୍ ଆସିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଇଡ୍ ମଗେଇଛି। ଆରେ ବୁକ୍ ଗୁଡା ଡାଉନଲୋଡ କାହିଁ କରୁନ? ଇ ଗ୍ୟାପ କୋର୍ସକୁ ପଳେଇ ଯାଅ।
Google search रे କରିକି ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସ ଭିତରେ you can download any kind of book in any number. କେତେ ଥର କୁହାଯିବ ତୁମକୁ? ତମେ କୋଉ ସେଣ୍ଟର ର କି ଆମର? କଣ ସାର୍? ରାଉରକେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭା ଯାଉନି। ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସ ରୁ ନେଟ କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ। ବହି readily available ଅଛି। କେତେ ଥର କୁହାଯିବ? ହେଲା। ହଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।